चतुर्थी था, तो आर यू गाइस सेलिब्रेटिंग हैप्पी गणेश चतुर्थी, तो आप बना रहे हो, ऐसे बात कर रही थी। तो कहते कि नहीं, हमने एक ठान के रखा था कि जब तक हम अपना घर नहीं लेंगे हम ये गणेश चतुर्थी नहीं मनाएंगे। सो आई मीन इट वाज देयर थिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग विद इट, बट But मैंने why कहा कि wait? मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू इट, मे बिकॉज इसे। एंड देन शी वाज आल्सो अनहैप्पी कि अभी तक हमने घर ही नहीं खरीदा है, तो इसलिए मैं हम लोग कर भी नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट डूइंग इट एंड मे बी दैट्स गोइंग टू ब्रिंग some lessons to you. Titi, I'll think about it. So I mean, I'm not judging Saima, but the thing is कि attachments यानी कि ये होगा तो मैं ये करूंगी, So ये नहीं conditions, होगा। right? Yes, contagious. So this is actually, these conditions are actually also the things कि attachment से दूर होना बहुत जरूरी होता है कि ये होगा तो ही मैं happy रहूंगी। Again, my sister, my own sister, I will just say that कि she's a biggest inspiration for all of us, क्योंकि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए उसके फेस में हंसी कभी नहीं जाती है। शी इज सो बबली चबली में, क्योंकि तुम किस तरह से खुश रह पाती हो। ऑफ कोर्स नाउ आई हैव लर्न दैट, आई हैव इवॉल्वड आउट ऑफ इट। तो जैसे हमने कहा कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, उथल पुथल मचता रहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं इस दुनिया में जो इसके बावजूद भी अपने को खुश रखना जानते हैं। और ऐसा नहीं कि दे आर हाइडिंग समथिंग, दे आर ओके विद इट Yeah. एंड दे आर नॉट फेकिंग इट, इट्स जस्ट नेचुरल, जस्ट कम्स इनसाइड कि इट्स ओके यार, इसके लिए क्या इतना माथा फोड़ना, क्या करना। तो आई थिंक ऐसे लोग भी आपके आमने सामने होंगे, तो उनको भी देखें कि शायद कि क्या मे बी हमारे साथ जो हुआ, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट अ बिग ऑफ अ डील कि हम लोग बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। So just moving and evolving and going out of this attachments, insecurities, ये सब जरूरी होता है। So uh, you're listening to Heart with Saima, and with me, I have my wonderful co-host. The one and only Saloni Archie Kalpana. So we come to you every Thursday from 1 to 3, and the first segment is about real estate, and then we transition into Heart to Heart, and we believe in touching lives. So that's what we are doing over here. We're sharing stories of ordinary people who do extraordinary things, and I think we are all ordinary people. Just on a daily basis, just trying to live our best life. Everyone is going through their own highs, lows, their own challenges. I always say that I come here not to कि मैं अपनी सोच को किसी दूसरे के ऊपर इम्पोज करूं, बट मैं सिर्फ यहाँ पर आती हूँ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए कि ये जो मेरा सफ़र 2016 से जो शुरू हुआ, and I mean that's a long time, although I have always been an optimistic person, मगर 2016 से I've been working and I've been learning and I've been taking classes. I've been just working on redefining myself and learning and changing my own life. And as I'm changing my own life, I feel, Kalpana, that I am finding the more I search, the harder I work on myself, the more mistakes I find, that I need to fix within me, and the more I work on fixing myself and doing introspection and self reflection, जितना मैं खुद के ऊपर काम करती हूँ, मुझे I find that it gives me peace and it puts me at peace with myself. So the journey is not about satisfying other people. The journey is not about pleasing anyone. The journey is ke, on the external side, you're just taking care of your daily problems and your kids and the challenges and the issues, the life things which happen daily basis के ऊपर आप उनको डील कर रहे हैं. But on the inner side, when you are constantly focused on yourself, अपने आप को सुधारना, अपने आप को बेहतर करना, उस प्रोसेस के अंदर आप दूसरे लोगों की फिक्रें करना बंद कर देते हो, आप दूसरे लोगों को जज करना बंद कर देते हो. आपको नहीं फर्क पड़ता कि किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या सोच है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है. जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, whoever wants to do, hey, good luck to you, right? Well, exactly, क्योंकि तो पर बहुत साल पहले मेरी बेटी ने पूछा था कि we were just watching one movie and उसने कहा कि मम्मी what is the meaning of a legend. तो मैंने कहा कि जो इंसान बहुत बड़ा होता है, कुछ अचीव कर लेता है, बिकॉज बैक देन आई डिड नॉट नो कि किस तरह से पूछे. कभी कभी अभी तो गुड गुड कि हम वी हैव अ गूगल, ऑफ कोर्स हम कोई भी चीज़ अभी गूगल कर लेते हैं इफ यू डोंट नो.
बट लेकिन टू द कोर ऑफ द थिंग शी वाज कि व्हाट इज अ लेजेंड मम्मी और हाउ टू बिकम अ लेजेंड. तो मैंने कहा कि भाई अच्छे काम करते जाओ और लेजेंड बन जाओगे एंड यू हैव टू बी इन द रेस एंड क्योंकि देख जो काम आप कर रहे हो वो करते जाओ, मतलब डोंट क्विट, डोंट गिव अप बिकॉज छोटे बड़े चीजें आती रहती है. ऑफ कोर्स आई डोंट नो हाउ मच शी अंडरस्टूड बट वी वर जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग सम ट्रेलर ऑफ एक नई मूवी आ रही है साउथ की, द लेजेंड. आई डोंट नो आ चुकी है, आई है. So again, she was laughing. Remember, you told me how to be the legend and everything. तो मैंने कहा कि उसको याद रहा, उसको याद रहा ये बात, यानी कि एक बात. देन नाउ आई वाज थिंकिंग, जब मैंने उस वक्त क्या बोला मुझे नहीं पता, बट देन आई थिंक कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं ना, करते जाओ एंड लव योर सेल्फ एंड ट्राई टू इंस्पायर एवरीबडी अराउंड यू. हेल्प करो, ऐसे नहीं कि भाई अपनी ही मतलब फायदा देखो. see कि what others also need it and उन्हें भी help करो grow, उन्हें भी progress होने में. I think that's itself being in the journey throughout, because there's no destination to reach. Being in the journey and do not quit. Do not get scared कि ये क्या हुआ मैं संभाल नहीं पाऊंगा. आई थिंक एक बात है साइमा, आई थिंक किसी के ऊपर भी कोई भी बड़ा भी पहाड़ टूट पड़ता है ना, मतलब ये गमों का पहाड़. आई थिंक भगवान या जो भी जिसकी हम बिलीव करते हैं, जो भी सोर्स को हम बिलीव करते हैं, दे ऑल्सो गिव अस स्ट्रेंथ टू डील विद इट. The initial days may be hard, I'm sure. I'm not saying it's very easy for everyone, but I think we also get the strength from that supreme power to even deal with no matter whatever the biggest problems we have. So why to just sit in that despair all the time? It's like oh my god, what's going to happen, oh my god क्या होगा, कल क्या होगा. Again, जैसे हम कहते हैं हमेशा याद होगा हमारे listeners को कि जैसे हम अपने phones को अपग्रेड करते हैं हर बार, इसी तरह हमें अपने आप को, अपने माइंड को भी अपग्रेड करना पड़ेगा. ये टॉक्सिक जो ये चीज़ें अंदर अंदर पनप रही हैं अनकॉन्शियसली, इन्हें हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा बॉडी से. और वो करने के लिए हमें कुछ या तो अच्छी बातें सीखिए या बस keep doing what you're doing and love what you do. That is the most important thing, is love what you do and do not worry. You can only, the reason we talk about self-love and the reason we share about self-love is because जब आप अपने अंदर मुतमईन होते हैं और जब आप अपने अंदर you fill yourself, your own vessel, your own cup with love, you only give to others what you have within you. तो जब आप अपने आप को प्यार, मोहब्बत, love, these soft gentle emotions, आप जब अपने आप को इन चीज़ों से भर लेते हैं तो and you're filled up, right, and to you contribute and you give to others from the overflow. because जब आपका खुद का घड़ा खाली होता है तो उस घड़े में कुछ मौजूद नहीं है. आप ओवरड्राइव के अंदर जाके it's kind of like आप अपनी गाड़ी के अंदर रेस एक्सेलरेटर को दबा रहे हैं मगर आपका गियर जो है वो न्यूट्रल में है तो गाड़ी चल नहीं रही है सही से, राइट. आई मीन यू हैव टू फिल योरसेल्फ अप. पहले आप खुद को भरेंगे तो ही आप ओवरफ्लो के अंदर से जब आप दूसरों को नर्चर करेंगे तो देन यू आर नर्चरिंग, यू आर गिविंग दैट पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज दैट्स योर ओवरफ्लो. योर ओवरफ्लो इज फिल्ड विद पॉजिटिविटी. On the contrary to this note, Saima, कभी कभी कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग if they have lot of experience in their life, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे richest इंसान वो है जिनके पास experiences है. Okay, not bank balance or not anything, those of experiences. So these experiences के वजह से कुछ लोगों में होता है कि इंस्पाइट उनका घड़ा नहीं भी भरा होता उनके फैमिली में, क्योंकि अक्सर जो है ये अनबन वगैरह जो है अपने खुद की फैमिली से ही आ जाती है. तो इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर ऑल्सो एबल टू गिव लव टू अदर्स आउटसाइड, क्योंकि उन्हें घर से नहीं मिलता, वो कहीं और बांटने की कोशिश करते हैं. वो कुछ लोग कर पाते हैं, दे स्टिल डू इट. बट अगेन इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ courage to love others and give nourish others, so why don't you just put and then let go the things whatever is not happening in your own family. और इसी के साथ हम जाने वाले हैं ब्रेक के बाद, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के कुछ ही देर के बाद. बने रहिए हमारे साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान. All right, so we are on a 5-minute break. How is everyone doing? Let's see. Finally, opportunity here to chit chat with you people. कैसे हैं? Let's see who
all has been here. Hassan, thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for your kind words and your compliment. Sudono City One, I'm so sorry, I mutilated your name. Thank you for being here. Hey, Muniza, how are you doing? Oops. Um, Nida Danish, Zara Farooq, Rubina Ahmed, Nasir Hussain, Shahid, बहुत बहुत शुक्रिया. Hey, Kalpana, you need to come here, right? I need to move. So, uh, let's see, Shahid, Asif Khan, Annie Campbell, Nazia Hassan Ali, Sanam Magda, Sohail Anwar, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Amina, कैसी हैं आप? How are you doing? Wajiha Khizr, you beautiful girl, how are you? Hey, Amina says, heard your show for the first time, loved it. Keep smiling, keep shining. Thank you. I'll keep shining and smiling. Mukesh Joshi, Zeenat Sanjo, Arshad Gauri. Thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you all for being here. So we are switching places. Kalpana is going to move over onto the console, and I'm going to switch myself to the other side. So bear with me, and we're gonna take you on a ride around the room. So ये मैं कुछ किसी को okay, I can't explain what I was doing. Okay, so uh, so because I have stuff on my screen, मैं भूल जाती हूँ कि I'm streaming live on. I forget that I'm streaming live on LinkedIn and YouTube. तो मुझे याद दिलाना पड़ता है कि okay, that's what I'm doing. So okay, so I think we're good. We're good to go. कितना time रह गया before we go back live? Okay, so मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारा जो रेडियो का स्टूडियो है, it's actually on the 9th floor. It's close to 75 and 635 for those people who are based in Dallas. So really cool, really nice view that we have here. Let's see. Are you able to? No, it's. Oh yeah, you are. You can see the view. Look, so we are on the 9th floor. How there are so many of these freeways going through. It is just so cool. I love to sit here and just look outside and watch all the cars go by. It fascinates me. So let's see. So I think we're good. Okay. So who all is here? So not sure who's watching right now because I am showing so many names, but I hope you guys are doing well. अगर आप में से कोई भी join करना चाहे right here on this screen here, Facebook की, if you would like to join me on the show and share something or share your thoughts or wisdom or anything you want, you can join me right here. So अभी कल किसी ने मुझे बोला कि कल्पना मैं क्या बहुत सीरियस दिखती हूँ? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है मैं सीरियस दिखती हूँ। हाँ, कल्पना तुम तो दिखती हो सीरियस। मैं जब तेरे को देखती हूँ तो वैसे I don't see myself on medical field. I need to smile more. So for those of you who are watching, can you please tell me if I appear very serious or not? Music आ रहा है? Alright, welcome back. आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान, प्रोग्राम है हार्ट टू हार्ट जो आता है हर थर्सडे दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक
और ये प्रोग्राम आप तक लेके आते हैं मैं द वन एंड ओनली सलोनी आरजे कल्पना, मेरे साथ होती है मेरी खूबसूरत को होस्ट। This is Saima Dylan. Let's touch lives together. So, Meg, for people who are listening, I'm sure most of you have not seen us. And I was told yesterday, Kalpana, that I look really serious. So, मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि I know I do have my serious side. तो मैं फिक्र नहीं करूं, कि मैं बहुत सीरियस दिखती हूँ. And it's a good thing because again अगर this is something that people have observed you, शायद उनका ये मकसद हो सकता है कि take a positive side, कि हो सकता है कि थोड़ा और मुस्कुराहट ले अपने चेहरे पे हंसे. I think that's something even I need to do. वैसे मैं हमेशा चुलबुली हंसी रहती हूँ, लेकिन जब I think कैमरा हो जाता है कि लाइट कैमरा एक्शन थोड़ा सा वो and it happens with everybody, that's okay, nothing to worry about it. लेकिन but we also like हमारी डिस्कस से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. काफ़ी लोग कॉल करके बताते हैं कि they love this show and they get connected with it और हमें हमारी बातें अच्छी लगती हैं. और आप भी जो सुन रहे हैं हमें अभी, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, which is 214-817-3333 पर. Absolutely. So we have been talking about self-love, love for ourselves. I think जिंदगी में कोई भी चीज़ हम करने के लिए जाएं, it all begins with love for yourself. Absolutely, and anything, I think it starts with you. I think any change, of course, जैसे आपने पहले कहा था कि किसी के कहने से, किसी के मोटिवेट करने से शायद कोई मोटिवेट ना हो, लेकिन it all has to come within you. When it doesn't happen, none of the mentoring, none of the classes or tutoring will help, क्योंकि वो अंदर से वो जो एक सीख पैदा होता है वो खुद से होना चाहिए. एंड इसे पैदा होने के लिए आई थिंक पहली बात है कि अपने आप से प्यार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. एंड हम आपको ये भी बताएंगे क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे होते हैं अपने आप से प्यार करने के. तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रेस कम होता है सामा, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होने लगता है कि सामने सिचुएशन जो है हमारे हाथ से निकलता जा रहा होता है, लेकिन अगर आप में ये कहने की हिम्मत है कि इट्स ओके, दिस इज जस्ट सिचुएशन, ये टेम्प्ररी है, अगर ये नहीं हुआ, अगर ये गाड़ी छूट गई तो क्या होगा, यानी कि कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, शायद दूसरी मतलब स्टेशन दूसरी गाड़ी आ जाएगी, हम बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. एंड of course anything that takes time is a learning time. And like we said in the beginning of the section before, is the richest person according to me is not the one who has the bank balance, who has a good house and all the best cars. I think the richest person is the one who has the experiences that they embrace and they apply first to themselves, और उसके बाद अपने आसपास के लोगों पर भी वो प्रोग्रेस होने की. क्योंकि लीडर का वही तो मकसद होता है ना, कि लीडर इट्स नॉट कि बस किसी को लीड करना नहीं होता, बट इट्स ऑल्सो हेल्पिंग देम टू ग्रो फर्दर. तो एक्सपीरियंसेस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, और इन एक्सपीरियंस को समेटे अपने पास रखें, और जो है कि जैसे हमने कहा था कि अपने आप से प्यार करें. एंड हम धीरे धीरे इस प्रोग्राम में बताएंगे क्या फ़ायदे होते हैं of self-love and being self-compassionate. Absolutely. We are, अगर हम देखा जाए तो we are surrounded by negativity which comes to us in the form of people. It comes to us in the form of news, social media. There is so much negativity that we are surrounded with. In order for us to change ourselves and find our own worth, we have to spend time getting to know ourselves. Every night we should sit and we should write down before going to sleep, write down or make a mental note of 5 things that we are grateful for in that specific particular day. And वो जब हम 5 चीजें सोचेंगे every night, and that's the last thing we do before going to sleep, then that's what we are going to sleep with, are those 5 thoughts. And when we keep doing it on a daily basis, every day, वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनके लिए मैं grateful हूँ. And they could be something so simple as maybe your pet, or just the ability to be able to smile, or something you ate, or your kids came and gave you a hug. So it's something so simple, but the 5 things, when you keep thinking about what you're grateful for and gratitude, और वो आप रोज सोचते रहेंगे और सोचते जाएंगे और सोचते जाएंगे, तो वो चीजें आपके अंदर ingrain हो जाएंगी, and they will become a part of the change
that you're looking to make within you. Absolutely. तो ये चीज़ें जैसे कि introspecting yourself is very important and it's very important in the current generation. It was always important, लेकिन पहले I think इन चीज़ों पे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। साइमा आजकल इनके बारे में बात होती है, कितने भी टैबू सब्जेक्ट्स हम लोग बात करते हैं एंड मीडिया अगेन मीडिया ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ प्रोस एंड कॉन्स। आई थिंक तो मीडिया का भी अपना प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन कोई भी चीज़ है कि वही समेटें जो आपके लिए अच्छा है। और अगर कोई भी चीज़ कोई न्यूज़ है या कोई देख के आपको आई थिंक आप थोड़े से उथल पुथल हो जाते हो, उलझने आ जाती है, तो जस्ट ट्राई टू नॉट सी दोज थिंग्स, राइट? ट्राई टू bring more anxiety, more stress to your mind. So I think getting rid of these insecurities and getting rid of these attachments. Of course, goal is important सबके लिए, लेकिन don't be goal oriented. I would say just be source oriented. Enjoy the things that you have in your hand right now. कोई भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आप कभी कभार यूं ही बैठ के अपनी फैमिली से चाय पीना एंड बातें करना, कोई भी चीज़ के लिए बातें करना, और ऐसे नहीं कि चाय पी रहे हो और कोई चीज़ लेके आओ कि मैंने कितनी बार कहा था आपने भी नहीं किया। सो अगेन ऑफ कोर्स दैट एनवायरनमेंट विल बी deviated to some other unpleasant conversation. So just enjoy that moment with your kids, with your husband, with your spouse or anybody. Just enjoy that because that is very important. अक्सर हम इस भागदौड़ की जिंदगी में ये चीज़ें करना भूल जाते हैं। तो पहले अपने आप से प्यार करिए और इतना प्यार करिए कि उतना ही प्यार कीजिए जितना आप अपने आप को संभाल सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्यार कर सकें और वो एंजॉय कर सकें। जस्ट जो भी चीज़ें एंजॉय कर सकें, वरना जैसे कि फिर रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म इज जस्ट सेल्फ लविंग सो मच and diving into that love that you don't understand anybody. I think utna bhi nahi, it should not go over the rate, but I think love that much which gives you peace, which you enjoy yourself and enjoy the things around you. So, life is very much perspective based. जो आपका ज़िंदगी को या हर चीज़ को देखने का जो आपका नज़रिया है, वो आपके हर चीज़ को डिफाइन करता है। जब आप अपने आप हर चीज़ को ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड के साथ व्यू करेंगे और आप रोज़ सोचते रहेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर XYZ, तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर आपका एवरी डे, आपकी जो एक साइकोलॉजी के अंदर वो ग्रैटिट्यूड इनग्रेन हो जाएगा। एंड फिर आप हर चीज़ के लिए, ज़िंदगी की जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप उन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी हम नोटिस नहीं करते, लेकिन कोई रास्ते से आप जा रहे हो और कभी आपको लगता है कि उसी रास्ते में कोई और गया एंड समथिंग बिग हैपेंड विद देम। सो आई थिंक अरे हम तो हर बार इस रास्ते जाते थे, हमें कुछ नहीं हुआ। It's just a blessing. I think there's a very small thing or big thing, no matter what. I think these blessings, sending through somebody and sending to somebody is very important. इन चीज़ों में से, और आपने जो नज़रिए की बात कही है, ये तो हम सब जानते हैं कि नज़र का तो इलाज किया जा सकता है, पर नज़रिए का नहीं। परसेप्शंस कैन नॉट बी चेंज्ड, समबडी एल्सेस परसेप्शन। जो आप सोचते हो, हम सोचते हैं, किसी पे उसका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है कि भाई आप इस दुनिया में आए हो और हमारा मकसद ही खुश रहना, तो पहले वो खुशी अपने आप में बांटिए और इसी के साथ चलते हैं ये अगले गाने की ओर। और गाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन टू मार्केट योर होम extensively to get your top dollar, go to Ajay Prabhu, a clean rental estate. So we have another here. Ajay has sold several homes quickly with multiple offers over list pricing using 10-step marketing plan. And Ajay Prabhu's number is 469-996-3104, or visit his website, which is ajayprabhu.com. And now our next song, which is यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। कल्पना मेरे शो में मैंने पहला देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, देन आई रियलाइज दिस इज अ रियल एस्टेट का ही है, बट तुम्हारा तो पहला सेगमेंट था ना, मैंने कहा चलो, बिकॉज़ वी वर नॉट रीडिंग एनी एड्स। All right, my Facebook friends, hi Pavan, hi Sapna, hi Raki. Thank you for watching. Yes, today our topic is the self-love. I mean, the power of self-love, and also the importance of self-love. What are the things that you enjoy when you start loving yourself? You're going to be so blessed of these tiny things that you have in your life, which you probably have ignored because of this rat race we all go into it. I think self-love is very, very important. So I love that much, which you enjoy the things around you. Also, you just
enjoy the relationship around you. That's very important. So that's all about our show. You're listening to Radio Caravan with me, the one and only Saloni Ajigutna, and my co-host Saima. So, if you learn to focus on what you have, you will always see that the universe is abundant, and you will have more if you concentrate and focus in your life on what you don't have. You will never have enough. So be grateful, like yourself, and I've liked me for a very long time. I said, and I've liked me for a very long time. No, I mean, I love We myself. should. I love myself, and no regrets about it. And like I said, everybody goes through ups and downs, and Accept yourself for who you inevitable. are. Yeah, you cannot avoid certain things, but there are only few people who just learn this mantra. I think unse kya ki they will definitely it helps them to improve. Like it reduces the stress and anxiety. It helps them to grow more, learn more, and give more. That's what is important in life. So, all right. So, इतना अच्छा मुझे यहाँ से व्यू लग रहा है है ना आज का मौसम बहुत और सारे there are clouds. There are I love this clouds. weather. ऐसे weather में गर्मा गर्म चाय हो जाए, पकौड़े हो जाए तो क्या बात है. इतना ब्यूटीफुल वेदर लग रहा है गाड़ियाँ जा रही हैं बादल छाए हुए हैं and it's just something today. I don't know. Maybe it's me. Maybe That's it's what loving me. is like. You're enjoying the weather outside because you're noticing, you're enjoying. These are the small Yeah. things. I think this is what it's all about. It has to be about the small things. It's also about the big things, but फोकस जो है वो छोटी चीजों के ऊपर कोशिश करते हैं कि ज्यादा करें. I don't know. I think I'm in a goofy mood. All right, we're going back. साथ चलने से मंजिल नजर आ जाएगी और सफर भी कट जाएगा और ये साथ अपना ही हो तो और भी अच्छा है और इस जर्नी में अगर इस रास्ते में अगर अपने साथ और भी अब समेटे जाएं रिश्ते जो भी जितने भी रिश्ते लिखे जाएं बहुत ज़रूरी है. I think that's what is the topic is always love yourself and we are victim of our minds. Saima, Of course. दिमाग में ही उलझे रहते आपका दिमाग आपको ले बैठता है. Your thoughts, right? Your overthinking kills you, and your overthinking will consume you, give you autoimmune diseases. Your overthinking, just 80% of the things we think about, they don't even end up happening. So you have stressed and stressed and stressed and thought about so much, and then 80% of it has not happened. Absolutely. So And the reaction, because 10%, 90% is our reaction, 10% is what actually happens. And then we just think and we just live in that past. Yeah. और उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ. Actually एक स्टोरी थी बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कि एक सेंट एक मीटिंग में गए थे एंड वहाँ पे मीटिंग करने के बाद जब लौट रहे थे तो एक महिला जो थी वो सिर्फ गिर गई थी. And then there was nobody else, and he was, I don't know, he was meditating or something, I think वहाँ पे वापस लौटते वक्त. Then he went and he rescued her. तो दूसरा जो बंदा जो दूर से देख रहा था जिससे समझ नहीं आती थी, उसने उनसे कहा कि 2 दिन के बाद जब फिर से मीटिंग हुई है फलाना, उन्होंने कहा कि आप तो सेंट है एंड आपने एक महिला को छुआ और आप तो बता रहे थे कि भाई ऐसा होना वैसा होना एंड आपने एक महिला को छुआ. तो then he said कि so that happened 3 days ago, and that was a situation which demanded and nobody was there. I helped her. और वो एक situation में था. I helped her and I got back and she went to her place. I will do. आप 3 दिन तक उसके बारे में सोचते रहे. यानी कि
it was in your mind more than whatever happened in the few seconds that I rescued, and then she was grateful and she said thank you and she moved away. तो ये चीजें जो हम सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, ओ माय गॉड, एंड दीज वर्ड्स आई थिंक ये हमें डूब ले बैठी है. आई थिंक इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी होता है सर. ऑफ कोर्स, आई मीन बिकॉज आपकी खुद की सोच ही आपको डुबाती है ना सबसे पहले तो, बिकॉज आप खुद जितने ज्यादा नेगेटिव होते हैं. आई मीन लाइक यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव हैड a very good relationship with myself, and we are like, you know, we have to work on this relationship, right? And when we go out, whether it's work or it's a work environment, it's personal environment, har cheez ke upar it requires a lot of work. And I had mentioned this in the last show as well, that this is something I've been working on. Ke I take myself out of my body and I'm standing there as a bystander and watching myself in my activities and in my reactions to my children, in my reactions to stressful situation, in my response to work stress. जब मैं एज अ बाय स्टैंडर बाहर खड़े होके खुद को वॉच कर रही होती हूँ, एक्चुअली मैंने ये अपने आप के अंदर एक क्लिक बटन जैसे मेंटल बनाया है कि मैं जैसे ही किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रही होती हूँ तो मैं अपने आप को इंस्टेंटली बाय स्टैंडर बना के मैं खड़े होके अपने आप को देख के बोलती हूँ कि you know what, standing from where I'm standing and looking at you, Saima, you are looking quite bad. So you need to fix your behavior, because जो इस वक्त तुम जिस तरह से react कर रही हो, जो तुम्हारी body language हुई हुई है, you know, your shoulders are like just shrugged and you are like, okay, मेरा दिल कर रहा है मैं किसी को चपेड़ लगा दूं. So I don't like the way you are behaving right now. तो उसके बाद एकदम से I take a, I'm like, okay, shoulders अपने fix करो, you know, अपना 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 posture ठीक करो, अपना demeanor ठीक करो, अपनी you know facial expressions ठीक करो. So I am constantly working on that, and you know, and like I say, the more I work on myself, the more work there is I discovered that needs to be done, that needs to be fixed. It's a constant journey. The key is you're working constantly on yourself, not to impress anybody, but just to enjoy yourself, right? That's the key thing. Yeah, so I can be a better mother, so I can be better at my work. I mean, I can be a better friend, because मैंने अपने अंदर एक चीज जो कल्पना नोटिस की है वो ये है कि अगर मैं if I get really ticked off या मुझे किसी चीज पे बहुत irritation होती है, तो मेरा जो first reaction है वो ये है कि okay, let me express myself, right? But I have realized that अगर मैं instantly react नहीं करूं और मैं अपनी frustration का इजहार instantly नहीं करूं, and if I sleep on it for 24 hours, मेरा reaction change हो जाएगा. Absolutely, because our thoughts actually unconsciously will trigger our words, our behavior. Yeah. So I think the thoughts are the very key things. I think उन्हें change करना बहुत ज़रूरी है. In fact, कुछ साल पहले मुझे भी कोई अगर कुछ कहता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि, and then as I said, I don't care. They think that they think it. लेकिन अभी क्या है कि अगर मैंने कुछ किया है, of course, even pre-compose, even that time also, अगर मैंने कुछ किया तो मैं admit करती हूँ, मैं जाके बोल देती हूँ, this is what happened, I'm sorry about it. लेकिन recently ऐसा हुआ कि जाने अनजाने में, not purposefully, somebody that came to our home, and which I think हमारे यहाँ होता है ना कि हम लोग कोई घर पाता है तो हम फिर रिटर्न गिफ्ट कुछ दे देते हैं वगैरह, ऐसा होता है. It's a very small example and I just want to share कि उन्हें जो है, मैंने उन्हें ऑलरेडी 2 दिन पहले हमारे घर आई थी, उनको दे दिया था, रिटर्न गिफ्ट हो चुका था. And then she also came again with the other group of friends. तो मेरे दिमाग में ये था कि इनको मैं 2 दिन पहले दे दिया था, तो that's fine. So I kind of gave to everybody and I didn't give it to her, and she did mind. She felt very bad, and उन्हें डायरेक्टली मुझे नहीं बताया क्योंकि this was not being actually communicated well properly. Then I realized कि yes, it was my mistake क्योंकि मैंने सबके सामने उन्हें ignore किया. It was not purposeful, but then I went and said sorry because and then she also took it very gracefully and she said yeah, fine, that's fine. ही उस वक्त मुझे बुरा लगा था, but then I thought कि I probably overreacted and all that, I shouldn't have. But मैंने कहा no, regardless of your overreaction or not, it was my mistake. It's not कि आप मैंने 2 दिन पहले दिया या नहीं दिया, but when you came with everybody else, I should have actually
acknowledged you or said something, या कुछ तो कहती, मैंने कुछ भी नहीं कहा, it was my mistake, and then it went very well. So Yeah. the communication and the clarity is very important. जब कोई चीज़ हम नहीं करते और रह जाता है, वो दब के रह जाता है, and that spending thing will come back and resurface again, and that validation, I think again we need validations and everything. I think अभी मैं उनसे ऊपर उठ के आ चुकी हूँ, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ों में इतना फर्क नहीं पड़ता. But again, having said that, there are still some relationship, I think, like I said, some relationship, I think I don't want to work on those, because I think those relationship, I feel that it's not worth it. I think उन पे कुछ भी, I think पानी डालो तो वो पौधा वहाँ पे उगेगा ही नहीं, इस kind of thing. And So that's okay. everybody will have it. If that is what is taking you, I think, consuming you, just leave that. Lekin work on other relationship, which is also important to you. So I think that's okay, because I think life में हमारा focus should not be what others are doing. Absolutely. Life में at least my whole focus is कि what am I doing? You know, what am I putting into the universe? What am I giving back? How can I fix? I mean, how can I contribute? Exactly. Not just that, because सबसे ज़्यादा दुख तो आपको उन्हीं से पहुंचता है जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, right? And जब वही you know, they are not there when they are supposed to be there, then it's hard. But Right. the thing is, if they were not there, it's okay. What can I give back? How can I make Absolutely. the situation better? Always be there, because I think if they're always apprehensive, you're making your attempts, and they're always been apprehensive, Yeah. going back. So I think fine. I think कुछ energies के ज़्यादा spend मत कीजिए, but do some blessings, do what you have to do in your capacity. But don't put. I mean, just shift your energy to something positive, and something gives you happiness, and that's again self-compassionate, self-love comes into place, and it improves the relationship also. And then emotional resilience, I think हमारे पास emotional resilience बहुत कम होता जा रहा है. जैसे हमने कहा था, intolerant people are getting very intolerant. अगर छोटी चीज़ें नहीं आती है, अगर आप ड्राइववे पे हो स्टारबक्स के पास और within a minutes अगर आपको नहीं आता है, और घर पे ऑलरेडी आप जो है वो अपसेट से निकले हो, तो वो आप उस पर भड़क जाते हो. सो वी आर बीइंग वेरी इंटॉलरेंट, बिकॉज इन दिस स्नैप ऑफ अ सेकंड ऑफ दिस वर्ल्ड की हर चीज़ जल्दी मिल जानी चाहिए. आपने रिमोट दबाया और जल्दी से जो है वो चैनल आ जाना चाहिए. अगर वो घूमता है, इट्स बफरिंग, इट्स सर्कलिंग, देन यू वर लाइक ओ माय गॉड. तो आई थिंक हमें एक आदत पड़ चुकी है, हर चीज़ फास्ट होने में नहीं होता, तो हम लोग वहीं पे थम जाते. ओ माय गॉड, आई थिंक 5G आने के बाद आई थिंक वी रियली गॉट सो मच ऑफ लग्जरी. बट एनीवे, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द थिंग इज कि कोई चीज़ अगर थम जाती है, धीरे से काम करती है, तो कोई बात नहीं. वो समय भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है. Again, the richest person in my point is, I think, the person who has a lot of experience and who use these experiences to help themselves as well as help others around them. And जब तक जिंदगी है, you know, ये चीजें चलती रहेंगी, and we will keep evolving, and at the end of the day, हम आप किसी दूसरे को बदल नहीं सकते हो. You can't change your children, you can't change your siblings, you cannot change your friends. कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा अगर toxic हो and it's eating up on your energy, then it's time to walk away from that relationship. And I think that's okay, because when you are in relationships where you're not happy, then it not just impacts you, it impacts everyone around you. So if you have toxic people around you, you know what, not just toxic, agar toxic nahi bhi hai, and if you're not happy, then it's time to move on. We are lost in so many unessential things that we actually miss the essential part of the happiness. जैसे कि सवेरे उठे तो क्या चीज़ है कि शायद आपको you just go to your child's room and say good morning to them and hug them. या फिर it could be anything. I mean, it's just an example. Like it can go. Everybody has their list of things there. It could be just sitting with your spouse and enjoying the weather and drinking a cup of coffee, or just taking your dog for a walk, or just listening to music. It could be a number of things that gives you happiness, and that happiness, just cherish them. से ब्लेसिंग कि चलो आज हमें ये वक्त मिला कि हमने ये टाइम जो है एंजॉय किया, बिकॉज वक्त फिर नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन चीज़ों को एसेंशियल थिंग्स बनाइए और नॉन prioritize, you know, don't put burden
on your children. Don't put a burden on yourself. Um, and I think that's all okay. Right, so we went on break, didn't realize, but Hey Jyoti, look, you right, said smile hi and I Shraddha, hi smiled. Anji, How are hi, you? thank you, and I'm today's topic looking is forward very to seeing lovely. you soon in two So me and months. Saima here, we're discussing So, on hey Meha, self-love, how are you? self-compassion, Kaisi ho? how to Are you actually enjoying enjoy life, and Thailand? these things are very We're important going for to visit you everybody. And soon when in we Thailand. get That's what the plan to is. Did your mom tell see and you? notice that, that's when the Let's stress and anxiety see. takes place. Hey, Patel, So Shreyas, thank you actually for being self-love here. also helps Feroz, how are you you doing? to get So, how is everyone confidence in you, doing? it improves your We're confidence, talking about it self helps your love. relationship around Uh, you, Meha, and what are your thoughts you on find self more love? time for yourself. I think I कहते हैं think ना हमेशा कहीं that you're strong there, time नहीं right? मिला, we don't have a time, we're That's so why you are in busy. I Thailand. think these things will slowly, you Um, will see that how it depends was when so, I'm paying attention on essential things around me, and don't be victim of your mind, because when you do all these things, um, that is only going to consume you more and more, more and more. It's only going to uh, dissolve you. I think just love yourself, so we just learn went to love into a yourself. break on the That's very radio, important. And and stay tuned. We have more to cover in next 30 minutes. ah, okay. So, see you in 2 weeks. Which weekend are you coming here? Uh, okay. I know there's a weekend, right? I can't remember which one it is, but I will see you on that weekend. 21st, is that what it is? Um, hmm. Oh, looking forward to seeing you go. So, I am hungry. आज मुझे टाइम नहीं मिला, so I've not eaten all day. Breakfast भी नहीं खाया है मैंने. So इसलिए मेरी थोड़ी सी energy level जो है वो down हो रही है because I'm hungry. थोड़ा स्नैक पड़ा हुआ था कि नीचे बाद में कर कल भी had the Dinesh पूजा ना, तो मैंने जो बनाया था प्रसाद वही लेकर आके जलेबी खा के निकले मैं बाहर. Are you still sugar free? I'm still. So it's Wow. I'm sugar free for quite some time. Because, That's pretty awesome. Yeah, it's the third week. Yeah. Wow. It's a biggest achievement. अभी I think कल I somebody got cupcakes और मैं ध्यान वहाँ नहीं गया. Wow. Otherwise वो cupcakes मेरे I would have eaten it, I would have enjoyed it. मैंने कहा yeah, but I still took them for my children. Yeah. But मैंने नहीं खाया. But yeah, see that's when if you prioritize and if you It's a mind thing, it's right? a mindset. I think when you do it, फिर बाद ध्यान भी नहीं जाता. Hmm. वरना मैं ढूंढ रही थी क्या है मीठा खाने के लिए, क्या है मीठा खाने के लिए. Yeah. So we have 1 minute more, 1 minute 30 seconds, and I'll read two, at least two of the ads. Please don't read any real estate ads. I've moved to the lunch because ऊपर ऊपर पड़ा हुआ था, and then मैं पढ़ने गई and I was like, huh? मेरे शो में? So yes, we talk about it all over here, and so for those people watching us live, you can see कि हम यहाँ पर किन चीजों के ऊपर we draw lines. It's like ads for other realtors. It looks like it's going to rain. Yeah, forecast में है. I don't know. Forecast is actually this is कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है, so we don't know. I haven't checked though. All right, so 20 more seconds. Okay, so it's not showing any rain right now. रात को दिखा रहा है all night rain. Okay.
और अब आगे हैं हम आखिरी सेगमेंट में। वक्त हो चला है सूरज की घड़ी में 2:35 और आप सुन रहे हैं रेडियो कैरावान विद मी द वन एंड ओनली सलोनी आरजी कल्पना और माय खूबसूरत को होस्ट। This is Saima, and let's touch lives together. और आज हम बात कर रहे हैं कि द पावर ऑफ सेल्फ लव एंड द the importance what happens when you love yourself. It's going to improve the relationship around you. It's going to reduce the stress that you have. It's going to reduce those, and it's going to give you energy. You just start loving the time around you. You won't say that I don't have a time for this, I don't have a time for that, but in fact you will find time and you will enjoy the smallest things in life. I think those gingerly steps, those baby steps is very important, and we all must stop and pivot and introspect ourselves, and this is a great time. There's no best time or here or there, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं अभी या फिर आप टीवी देख रहे हैं या फिर अभी हमें सुन रहे हैं तो जस्ट गिव इट अ पॉज एंड सोचिए कि क्यों क्या चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं। कोई दो चीज़ें सोचिए एंड स्टार्ट डूइंग इट, चाहे वो छोटी चीज़ हो जो आपको लगे कि ये तो बहुत सिली है बट नथिंग इज सिली। स्टार्ट डूइंग इट एंड सी the importance and the charm into it कि कितना मैंने कहा कि आपको लगेगा कि क्या हम ये छोटी चीज़ करने के लिए भी हम इतना सोचते थे। और ये तो this will give you happiness on and the smile on your face. I mean, if you don't take care of yourself, you can't take care of anyone else around you. So you have to first take care of yourself. Just little things that you can do for yourself, which bring a smile to your face. Taking care of your health, like Kalpana was saying, just small things, you know, like if you enjoy a certain class, maybe Zumba or Pilates or anything, start going and doing those classes. Go for a facial, go get your nails done, go for a mani pedi, go get your hair dyed. You know, for myself, I love to dress up. So कभी कभी तो मैं लोगों को पहले ahead of time मैं लोगों को बोल देती हूँ कि देखो we are about to meet, मैं तुमको पहले ही बता रही हूँ कि I love to dress up, so I will be dressed up so that you are not intimidated when you actually meet me and you're like ये ये पता नहीं कहाँ जा रही है इतना तैयार होके, and it is something पार्टी जाती हूँ and they don't mention the attire Saima और मैं मुझे लगता है कि मैं overly dress होके गई हूँ यहाँ पे। Exactly, I love dressing especially when I go to the party. कल्पना मैं हमेशा overdressed होती हूँ pretty much because I love to dress up. So that's it. These are the small things. If that gives you smile on your face, it makes me happy. Yeah, go ahead and do it and do not worry क्या कहता है और क्या सोचता है। तो आपको अगर खुशी देती है तो कीजिए, छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी है। पर हमने कहा कि इतना प्यार करिए अपने साथ जितना आप अपने आप को एंजॉय करें और आप अपने आसपास की रिलेशनशिप ताकि आप खुश रह सकें, को भी खुश या एंजॉय कीजिए। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो and with that I will play this next song और song के बाद हम बात करेंगे कुछ और important चीजें which is importance of the power of self love। और बताना चाहूँगी इस गाने से पहले कि Haji Ali, the freshly cut hand breaded fried chicken, tender freshly cut fried chaat, bun kebab, ginger burger, try 100% pure freshly squeezed juices, no water, no sugar added. वैसे मैंने शुगर छोड़ दिया तो also freshly made sugar cane juice with lemon ginger, ये मेरे लिए नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए होगा, जरूर पीजिएगा। And hand beat desi coffee with chocolate drizzle on top, homemade kulfis, desi ice cream flavors, and gula gandhi malai. Haji Ali located in 6300 Independence Parkway, open all 7 days, on weekdays from noon to 11 p.m. and on weekends from noon to midnight. अब चलते हैं ये खूबसूरत। तो मुझे तो भूख लग रही है कल्पना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ से शो के बाद आई थिंक हाजी अली पे ही चला जाना चाहिए। चलिए, और तो सहमत जाने वाली हाजी अली, तो आप भी वहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ। और मेरे लिए खास को जब दिख नहीं रहा, वैसे काफी स्वीट दिख रहे हैं, बट आई विल डेफिनेटली try this place तो चलिए, क्योंकि वेदर अच्छा है, बारिश गिरने वाली है बहुत ही सुन, तो चलते हैं ये खूबसूरत गाना। Not according to forecast. This is भाग्य।
Okay, so as you guys on the live can see that I'm in a goofy mood, I'm just trying to prove that statement wrong, that I'm a serious person. या अच्छा ये मैंने कुछ ज्यादा मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत पढ़ा है गोला बस जो हो गया वो हो गया. Did you hear that? Whatever is in the past is in the past. We move forward from here. We don't dwell on the mistakes. Exactly. It was not a mistake. It was an experience Experience gain exactly. that did not give. मैंने सुन लिया I didn't notice. Okay, that's fine. I'm not going to repeat what I said. I did not hear anything. That's good. That's good. I plead the fifth. Alright, मेरे so पेट ये में हाथ खाना से नहीं है. इस स्टूडियो हम ऐसे मजाक करते रहते हैं कभी-कभी हो जाता है बड़े-बड़े शहर में छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं. But we're not going to bring focus on that what happened. Good afternoon Radio Caravan, कैसे हैं आप? शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू अच्छा हेल टू नेल निसार एनर्जी कैसे हैं आप देखिए अभी तो गाना देखो कितना अच्छा लगा है आपके लिए तो ये गाना सुनिए और ड्राइव ध्यान से कीजिए और एंजॉय कीजिए गाना भी और अपने आप को भी थैंक यू जी हाँ हाँ बाय बाय हेल टू नेल जब मैं कर रही होती हूँ ना when you're not here तो मैं तो चलती रहती हूँ. I love songs also मेरे को बीच में लगा देते हैं वरना भाई he was saying कि I'm enjoying your show and loving this songs also मैंने कहा songs में ज़्यादा लगा तो नहीं है but चलो अच्छा है. Alright guys so we will go जब भूख लग रही होती है तो इंसान जरा गूफी हो जाता है तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत गूफी इस वक्त हुई भी हूँ तो पहले तो मैं उस पर्सन को वो मैं डिस्प्यूट कर रही हूँ उस स्टेटमेंट को वो जो मुझे मैसेज किया था कि आप बहुत सीरियस लग रही हैं तो मैं उसको डिस्प्यूट कर रही हूँ क्योंकि I normally don't watch myself again after I post on air. मैंने कहा कि लेकिन नहीं मैं भी नहीं अपने आप को देखती बट अभी इधर मैसेज आया था जिसपे लिखा हुआ था स्माइल. तुम तो स्माइल करती हो मैं उस वक्त आई थिंक उन्होंने तब देखा होगा कि जब मैं सोच में गहरी सोच में मुब्तला होंगी. So that's lovely. So anyways, I'm just proving it wrong, but I'm not a very serious person sometimes. ये खूबसूरत गाना डेफिनेटली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस क्योंकि कहीं कहीं पे बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है पर यहाँ जहाँ से हम बैठे हैं बादल बहुत घने छाए हुए हैं अभी तक बारिश गिर नहीं रहा है बट वी आर एंजॉयिंग दिस वेदर सो वैसे भी आप भी एंजॉय कीजिए जो कुछ भी आपके साथ है जो भी नज़ारा है सामने वेदर का या फिर जो कुछ आप खाना बना रहे हैं चाय पी रहे हैं एंजॉय कीजिए मस्त मजे में रहिए. So we are all, we are high energy beings, and it's all about our level of energy. You know, then that's what we should focus on. Our life, a goal in life, is to keep our energy level high. कल्पना जो है वो इस वक्त कल्पना का बहुत वो गाना सुन रही हैं, and she's almost ready to start dancing. And Kalpana, that is a very good thought. Let it out. You seem to be looking beautiful. You feel seem like happy today, and I think setting the aura to each other and then creating that for each other also. I think that's important. Power of self-love. Power of self-love.
एंड देखिए कितना कुछ आई थिंक अचीव कर लेते हैं हम लोग। छोटी खुशियाँ जो हैं, छोटी खुशियाँ समझना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि देखो बड़े बड़े तो हादसे होते हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो समेटना चाहिए और याद भी इन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जो है चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वरना गम खुशियाँ देखो दिन और रात की तरह हमारे सबके साथ आती हैं, और these are inevitable, you cannot avoid them, but how to embrace them, how to still be strong, and like I said, um, just improve your strengths, and then just ignore your weaknesses and then work on them. I'm not saying ignore, but just again work on them, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ जो हम कल थे वो आज नहीं है, और कल हम बेहतर इंसान और बन सकते हैं. So just keep your energy level high, ताकि you stay on high vibration level, and you know what you treat yourself with love, with respect. तो हर चीज इसमें आ जाती है, इसमें exercise आ जाती है, इसमें what you eat, it comes into play. And I love desserts, and I love chocolate pastries and cakes. And I had a business meeting last night at a Grand Lux Cafe. So वहाँ पर you know जो business meeting थी उसके अंदर the person who was there loved chocolate cake too. So usually हम dessert order नहीं करते हैं business meetings पे, but he insisted कि we have to order and that we need to order separate desserts because कोई भी share नहीं करेगा. तो सब उनको सबको पसंद है, I think that means that's nice, that's nice. तो देखो आप स्वीट्स की बात करें, फिर भी मेरा दिल वहाँ पे जा नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्वीट्स छोड़ दिया है. पहले मैं बता दूं हमारे लिसनर्स को कि आई लव स्वीट्स, आई लव डेजर्ट्स, लेकिन जब से मैंने ठान लिया कि नहीं खाऊंगी तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है. Which is excellent. Which is good actually, क्योंकि मेरे लिए ये छोड़ना बहुत मुश्किल था. I was just trying to see कि मैं ये छोड़ सकती हूँ कि नहीं. And of course it's all about like being content and be how much we can commit to ourselves if we have जब आप किसी चीज को ठान लेते हो ना, it's mind over matter, right? When you say कि you're going to do something, then you are ready to do it. Exactly. तो आप जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने thoughts on how, if you have ever conquered any of these kind of struggles in your life, और आपको लगता है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखा है, तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए. सूरत का नंबर है 214-817-3333. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो कैरवन. It's all about keeping yourself whole and keeping connected and knowing that only positive energy will bring positive energy. And if you are positive and you control your energy and you keep it positive, then you are going to be surrounded by positive people. जो आप जिस चीज से भी लाइफ में गुजर रहे होंगे, that is what you're going to start attracting at that time. बिल्कुल सही है, क्योंकि सब देखो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर 10 साल पहले आपने उनको देखा होगा कि आपको लगेगा कि भाई ये पहले ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे हैं, चाहे अच्छी हो बुरी बात हो जो भी हो. लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर वो 10 साल पहले ऐसे नहीं थे, and they have evolved themselves, they have learned from their experiences and they have done something better for themselves and also the people around them. तो उनको देख के सीखें कि क्या चीज़ें थी जो उनको पहले रोके रखी थी. उनका जो आई थिंक माइंडसेट, समथिंग स्पेशली इज अ माइंडसेट जो रोके रखता है हमें. कोई और हमें रोक नहीं सकता, कोई और हमारा सक्सेस छीन नहीं सकता. It's just हम घेरे होते हैं हमारे माइंडसेट पे. We are all victims of our mind, and I think we hesitate maybe due to the insecurities, due to the lack of confidence and lack of support. And most people are also people pleaser. People pleaser, exactly. Right. And a lot of them are, especially because is an Asian community around there who listen to us. काफी महिलाएं जो हैं वो I think वो it speaks, we are product of our upbringing, Saima. I think ऐसा कहा गया था बचपन से कि भाई लोगों को प्लीज करना है स्पेशली महिलाओं के लिए, एंड वो उस कुकुर में रह जाती हैं कि नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग right? क्या कहेंगे, और शायद हमें हमारे पेरेंट्स को गंदी I think they will have a bad impression on them. तो ये सब चीजें पहले सिखा के कितना कूद गया होता है दिमाग में. ऐसे नहीं करो, ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे, वो करोगे तो लोग क्या कहेंगे, right? I mean, it's a constant, but the thing is you have to break free from it, exactly. right? The people who break the stereotype, even पहले ज़माने में भी आप देखें कोई लोग जो the people who have the courage to break the stereotype were always being judged and being put a finger on them कि ये ऐसे क्या कर रहे हैं. But
आई थिंक करेज होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यहाँ पे भी वी शुड बी ब्लेस्ड कि हम इस ज़माने में है कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करने से आई थिंक पीपल आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, तो इतना ज़्यादा वो तवज्जो भी नहीं देते। लेकिन ये जो चीज़ें हम सीखना चाहते हैं लोगों से, कोई अच्छी बातें, वो चीज़ें अप्लाई कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, बट डोंट कीप कंपेयरिंग एंड कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल डू लॉट ऑफ थिंग्स, अगेन लाइक आई सेड द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन डिस्पैरिटी। आई थिंक अलग अलग चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गार्डन में अगर पूरे गुलाब के फूल मिले तो आपको लगेगा कि यू वुड लव टू सी सम अदर फ्लावर्स ऑल्सो। ऐसे ही दुनिया में भी अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों से मिलजुल के कैसे रहना है और रहकर भी अपने आप को कैसे प्यार करना है, ये सब सीखना बहुत जरूरी होता है। And that's what life is, right? Like, jab tak hum hain, it's all about learning and it's about evolving and it's about changing. आप जब चीज़ों को करेंगे because you're doing them to please other people, तो आप कभी भी satisfied feel नहीं करेंगे। मगर आप जब चीज़ों को करेंगे because I feel कि हमें खुदा ने मुकम्मल बनाया है। हमारे we have a heart, we have a mind, we have a soul, we have a conscience, we have इंट्यूशन जो हमें गाइड करती है। ये सब टूल्स जो हमारे अंदर हैं, आई थिंक वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट क्रिएशन ऑफ आवर क्रिएटर। एंड वी आर, जो चीज़ें आप बाहर तलाश कर रहे हैं वो आप चीज़ें खुद के अंदर पाएंगे। when you start listening to yourself, when you start listening to your intuition, when you follow your dreams and you do even if you make your mistakes, they are your mistakes. You own them. Stop being that permanent victim who's always कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ दूसरे ने वो किया, मेरे साथ ये। क्यों लोग आपके साथ वो कर रहे हैं? क्योंकि वो आप अंदर से आपके कुछ चल रहा है जिसके अंदर you're constantly focused on what is going wrong. So, focus on you. Right. Yeah. Always they want to just seek validations कि हम हमेशा सही हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, and this constant struggle of being that I'm seeking for the validation and always explaining yourself. Stop that. I think stop that. किसी को explain करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि आपने ये किया है, कहा है और उनके दिमाग में ऐसा है, तो don't keep going and explaining. कि ठीक है उन्हें ऐसा लगा पर आपने ऐसा किया कि नहीं, इट हैज टू बी विद इन यू, राइट? इट्स तो आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, दैट इज फाइन, दैट्स फाइन इफ दैट हैज हैपेंड। अपने आप को, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द हाईएस्ट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ हैप्पीनेस। I think that's again, it comes when you have experiences, when you gather these experiences, good, bad, nice, and whatever kind of experiences you have in your life, gather them and then go with it, because these are very important in your life. Yeah, so and equally important is the fact कि how do you behave in your own household? Because are you fighting all the time? Are spouses fighting all the time? You know, so a lot of people, yeah, a lot of people stay in marriages and they are continuously. I met someone yesterday, Kalpana, and he told me that his divorce is about to go through in a few weeks, and he said that. For many years all they have done is constantly fight, and he said कि now his children are not talking to him because the children have been fed stuff in their head and uske against kar diya hai. So the thing is कि people should realize that when you are constantly feeding negative thoughts into your children's mind, you are diluting their purity. And you will also not be loved actually, because if you're constantly complaining, too much vocal, they cut you off, right? Yeah. So if you're just always being vocal about they did this and he did this, she did this, and you want But आप अपने बच्चों की भी तो life destroy कर रहे हो ना? Already तो बच्चे हैं, बड़े हैं, लेकिन environment ही खराब हो चुका है, because it's been diluted, it's been intoxicated in such a way कि बच्चे भी वही consume कर रहे हैं. So then that's what they're becoming, right? They're unhappy, they're miserable. So you don't realize कि जब when kids stay in these toxic environment where they only see their parents fight all the time and they don't see any love, that is heartbreaking for the children. That's true. I think you need to find a time when you can take a time and talk to your spouse separately
sometimes it's necessary for children to also see a little bit of fights in home, so they Of understand how course. to resolve problems. छोटी छोटी चीजें ठीक है, लेकिन अगर it's happening constantly, or constantly you're nagging and you're bashing and then it's saying that this that, so it's not good for you, because you're not loving yourself and you're always seeking the perfection. तो ये ना आप खुश हैं ना आपके सामने वाला खुश है, और जो भी और आपने क्रिएट किया है जाने अनजाने में ही सही, वो भी अच्छी बात नहीं है, ना आपके लिए, ना आपके बच्चों के लिए, ना आपके स्पाउस के लिए, whether you decide to live with them or not live with them. I think इन चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है चार दीवारी के अंदर। तो चलिए, अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, वी गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ समरी, एंड हम सुनाते हैं एक छोटा सा गाना आपको, एंड देन विल कम बैक एंड गिव यू विल रैप अप आवर शो। सो दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम सिर्फ तुम। सो सुनते हैं पहली पहली बार मोहब्बत। So थोड़ा सा wrap up करते हैं. So you can go and then I can go. We have, I won't play this song for long. एक मिनट चलाती हूँ. So शुरू हो गई बारिश. पर कितना beautiful लग रहा है यहाँ से. बहुत अच्छा लग रहा है. I wish. Yeah. Okay, so let me show Yeah. the I people want to who are show it to you, here. my friends. There's a Okay, beautiful so I'm weather going to here. show you this beautiful I view. can see it. Look at I my can go दिखाती there. रहती हूँ. But look at that. This is Saima. Say hi. Hello. Hello. And that's So a beautiful. look at that. Look at that view. Now get there. So we are on the 9th floor, and I just love looking outside. As you can see, कि traffic फंसा हुआ है वहाँ पर. Look at all those freeways, and this is called the Mix Master. And कितने सारे यहाँ पर I think 4-5 flyovers हैं जो एक दूसरे के ऊपर से नीचे से left and right जा रहे हैं. And I just love watching this. I just think it's so cool and wonderful. So this is for, I'm not sure who all is watching, but this is especially for people. But we are on the 9th floor, so building के highest level के ऊपर है. So बस अब show खत्म होने वाला है, and we are in the last 4 minutes of our show. Ready? Alright, आगे हम वापस तो वक्त रह गया बहुत थोड़ा सा, and we will do a wrap up. हमने आज बात की power of self love की, and the importance is कि it reduces the stress when you love yourself. You will develop the healthier habits. You start loving yourself. You start like when you eat good, your eating habits will change. You will do some exercise. You'll give some importance to your body. That's also important, and you will improve the emotional resilience, which is very important because this intolerance has been going. That's I think very important for everybody to get rid of that. And again, the most important is you're going to love yourself and you're going to improve the relationship around you. And Saima? Yeah, so I think self-love starts with you. Everything in life starts with you. जब आप खुद से मुतमईन होंगे, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो you will be at peace with yourself. And at that point, whatever you give out, whatever energy you send out into the universe, that energy is very pure energy, because that energy is जो आप अपने अंदर अपने लिए feel करेंगे, that is exactly what you're going to pour out, because you give out from the overflow of your own vessel. जब आप खुद अंदर से खाली होंगे, you have nothing to give, you're in overdrive mode. You keep trying to give, but this you just don't have enough to give, because life is all about it's about what you do for yourself, you do for others. So take care of you, take care of your health, take care of your mental, physical, emotional well-being. क्या खाना आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, because आपकी बॉडी is so brilliant. Your body will give you signals, it will tell you exactly वो react करेगी जब आप कुछ गलत चीज उसके साथ हो रही होगी. So take care of yourself, it all begins with you. Absolutely, that was a word of wisdom for today's show. And I hope you enjoy this show of Power of Self Love, and enjoy this show also, which comes every Thursday 1 to 3 p.m. only on the radio station Radio Caravan. With that,
Me, the one and only Saloni Arjigantna, signing off, and This Saima. is Saima Dillon. We do come to you every Thursday from 1 to 3. We do stream live. आप हमें Facebook, YouTube, LinkedIn सब जगह पे watch कर सकते हैं. We do stream live. And we look forward to coming to you again next week. We do begin the show with a real estate segment, Dallas market update from 1 to 1:30, and then we transition into heart to heart. So we look forward to seeing you next week. Until then, stay safe. All right, Facebook friends, and My friends, with that, we I'm will also see you signing off next time. on the Facebook Live. See you again next week.